चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। तरह तरह के बच्चे, नाचते बच्चे, फोटोग्राफ खींचते बच्चे, अर्जुन आरोही की गोद में बैठकर शर्माते बच्चे और इन बच्चों के बीच बच्चा बनने या फिर यूं कहें कि अपनी लाइफ में आने वाले बच्चों के साथ खेलने की प्रैक्टिस करते अर्जुन आरोही और प्रतिज्ञा जी तीनों ही पहुंच गए हैं इस बच्चों के डांस कंपटीशन में। ये हम तीनों के फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट, जो हमारे पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका इवेंट था। ये हमारे और उनकी वाइफ, ये बेसिकली इनके डांस स्कूल का एनुअल फंक्शन था जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे डांसर्स थे। अच्छा तो ये बात है, लेकिन यकीन मानिए कि तीनों को ही इन क्यूट से बच्चों के साथ खेलने में काफी मजा आ रहा था। आपको पता है जब कैमरा पैन हो रहा था करण डांस ही कर रहा था, उसने कैमरा के सामने नहीं किया। मैं कुर्सी पे बैठ के भी बहुत अच्छा डांस कर लेता हूँ। हाँ। और ये जनाब तो प्रतिज्ञा जी की गोद में बैठकर बिल्कुल नन्हे कृष्णा की तरह मस्ती कर रहे थे। तो करण को घर लेके जाना है उसको। और ऐसा होता भी क्यों ना, सभी बच्चों को ये तीनों अपने ही तो लग रहे थे। और जरा देखिए तो कि किस तरह से अर्जुन आरोही और प्रतिज्ञा तीनों का ही एक ऑटोग्राफ लेने के लिए होड़ सी मच गई है। लेकिन लगता है कि इन भाई साहब को तो इन तीनों के फोटोग्राफ्स और ऑटोग्राफ सभी मिल चुके हैं, तभी तो ये बिल्कुल फुर्सत में इनके फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। अब इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, क्योंकि डांस कंपटीशन भी अटेंड हो गया और गुड न्यूज के सीजन में आरोही और प्रतिज्ञा जी दोनों को ही बच्चों को संभालने के टिप्स भी मिल गए। मुंबई से आरती गुप्ता के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट हॉट एंड सेक्सी कपल करण कुंद्रा और कृतिका कामरा से हम आपको दिखाएंगे उनकी ऑन सेट प्यार भरी मस्ती के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री तक आने की जर्नी। India Forums is trying to create a controversy. India Forums is trying to create a controversy. We are sitting in the van and shooting, but not for the show, for India Forum. We also have Garibon ki Kareena Kapoor with us today. Hey Sunil Shetty. You know, there's so many things that me and her do like in the same way, which just instills the fact that we were either brother sisters or we just are brother sisters. I think her dad messed up or my dad messed up. Excuse me? Glycerine! You should start another forum. I mean, another section in the forum. For good-looking creatives. Again, you know, you're not a part of that. This is our life, very happening inside the vanity van. This is all we do. Let's meet the puke master. We name her Golu, the puke queen. And the dumb ditcher. Yeah. No, she's not a ditcher. She ruined my Jack and Jones ka shirt. You know, till now I thought friendship was about crying over a shoulder. I think in Mukti's case it's about puking. So that's the kind of friends we are. Yes, you have to see when Karan is dancing. He's saying this. I, Golu, broke your record. Yeah, this is something that he kept saying after he was done dancing, because as you know, Mukti is a benchmark, and Karan thought that he had beaten Mukti, but he was just drunk. He was just drunk. Next day morning he knew it. We love you. He's pretty, he's pink. He likes pink, he's metrosexual, he likes pink. Anyways, and he takes more time to get ready than me. He takes more time to get ready than me. Yes, his vanity is pink, and he likes to be driven around. He likes to be cooked for. He doesn't want to do his work on his own. And yeah, you like driving, but people around you pamper you. Yeah, I like being pampered. And He takes 2 hours to take shower. yeah, that's true. He has more beauty products than me. Yo, princess! So Karan was basically spotted on Facebook, and yeah, and then I think Ekta called him. Yeah, to somebody meet, from the office. and he messaged came me, and I came and I met Ekta. And yeah, and he got the show, and he was going abroad for a trip, but he had to cancel all that and stay back and act. And since then, he's been acting. I've worked in a rubber factory with my dad. I've worked in a call center. I had my own call center. I've worked in so many fields, but you know, being an actor, I think now I've realized that this is what I really want to do, because it's kind of
passion for me now. Kritika was already an actor. I'm telling you how she came into Kitni. She was not agreeing. She was not agreeing to do Kitni. We had to Vikas, one of our friends, the creative that time for Kitni, had to run after her like for 15-20 days before she agreed. Shut up, that's a lie. Not yeah. so much, but Yeah, or at least a week. we are not drunk. We are just as insane, and I hope you have a set of friends like this. If you don't, go get some, go buy some. I don't care. Or But if you don't have a set of friends like these, don't get them. No. Karan says every week he says he wants to get rid of us, and then he just comes back to us. Or make sure you don't have friends like Karan Kundra. Otherwise you'll be. High five. गलती हो गई, मार दो हमें. अब जरा टीवी इंडस्ट्री के बेस्ट कपल की मस्ती से आप लोग बाहर आ जाइए. हम लोगों को पता है करण कुंद्रा, कृतिका कामरा, मुक्ति और अदिति बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो अदिति के बर्थडे पे क्या विश किया इन दोस्तों ने और कैसे थी सरप्राइज पार्टी, ये हम आपको दिखाते हैं. We were actually having this secret meeting about what should be done for her birthday. Conclusion अभी ये निकला है ये कि निकला है कि कभी भी लड़कियों को बैठ के बर्थडे प्लान नहीं करने चाहिए. You don't get any. Yeah, right. As if you were giving all the bright ideas. अच्छा, अदिति अभी यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि उसके चूहों ने फिर से बच्चे दे दिए. अदिति माँ बन गई. No, she's watching Dexter. Oh yeah, she must be watching Dexter. मतलब अदिति माँ वैसे नहीं बनी है, मतलब उसके चूहों ने बच्चे दिए. चूहे एक्चुअली हैमस्टर्स हैं. मुझे समझ नहीं आता. I think